Hello everyone. As you know that I am doing Indian Polity by Laxmikanth. Last class we have seen the part 1 of chapter 3, which is nothing but is the salient feature of the constitution. Okay, today we are going to see the part 2 of chapter 3. Okay, so let's see what are other things is given in this chapter. Okay, this is about myself. So let's see today's lecture. Okay, so the fourth feature is nothing but is the federal system with unitary bias. Okay, so let's see what is given in this. Okay, the Constitution of India establishes a federal system of government. It contains all the usual features of federation: two governments, division of power, written constitution, supremacy of constitution, rigidity of constitution, independent judiciary, and bicameralism. See, what is the meaning of federal system or unitary bias? See, the meaning of federal system is nothing but the power of division of power. Okay, so we have already seen that we have central government at the center, union government at the center, and at the state level we have state government. Okay, at the center level we have prime minister, at the state level we have governors and chief minister, etc. So this is nothing but in our constitution there is a division of power between the center and state, so which is nothing but is the federal system. Okay, so I mean the feature of federation is nothing but is the two government, okay, division of powers, obviously written constitution that we have already seen, supremacy of constitution obviously, and this is about why it is unitary bias with these things, rigidity of constitution, independent judiciary and bicameralism. अगर आप जैसे देखो जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, they are completely separated from the, you can say, the legislature. They are completely independent. Okay, the legislature cannot control to the judiciary, or judiciary cannot control to the legislator. So that's why it is independent judiciary. Bicameralism, we know that. Okay, we have Lok Sabha and Rajya Sabha at the center level, and the state level we have state assemblies. Okay, apart from state assemblies we have in the state level, in some of the states we have legislative council. Okay, so these are nothing but is the bicameralism. Next, however, the Indian Constitution also contains a large number of unitary or non-federal features. Okay, and apart from this, okay, so Indian Constitution also contains large number of unitary or non-federal features. जैसे कि we have federal system, okay, but we have many things which is unitary in nature. Okay, this is the meaning. So how it is like strong center, so whatever center we have they are very strong, single constitution. For both state and center we have single constitution. Like if we compare with the US, okay, so we have for the US we have they have actually two constitution, like one constitution for entire USA, but every state has their own constitution. Like California has their own constitution, or Texas they have their own constitution, but in India is not like that. We have single constitution and it is applicable to all over India, okay, to all these states. Okay, so this is the thing, single citizenship. Okay, so whether you belong from UP or you belong from Kerala, everyone is citizen of India. It's not like a person who is from Kerala, they are the citizen of Kerala. A person who is from UP is the citizen of UP. No, everyone is the citizen of India. That's why it is single citizenship. So if we compare with the US is not like that. In the US, like they are citizen of USA, as well as a person who is staying in who is from Texas, or you can say
South Dakota or North Dakota or Carolina or whatever state, Texas or California. Okay, so they are actually the citizen of California as well as they are citizen of USA. So they have actually dual citizenship. But in India, we don't have the dual citizenship. We have single citizenship. The meaning is that, whatever state you belong, you are the citizen of India. Okay, you are not going to belong from that particular state. You belong from that particular state, but you are the citizen of India. You are not the citizen of UP, or you are not the citizen of Tamil Nadu. It's not like that. You are the citizen of India. Flexibility of constitution, we have our constitution is flexible. We have different kind of we can actually modify, or we can say amend this constitution by different means, like by simple majority, by special majority. So that's why it is flexible. Sometimes it is rigid, sometimes it is flexible, based on whether we are doing amendments or we are coming with the ordinary bill. Based on that, it is rigid as well as flexible. So that's why it is flexibility of constitution. Integrated judiciary. What is meaning of integrated judiciary? For example, like we have district court, then we have high court, we have Supreme Court. Okay, so integrated means, like suppose a person lost case in a district court, then he can go to the high court, and the same person is lost the case in high court, then he can go to the Supreme Court. Okay, so then if he will won in Supreme Court, that will be the final. Okay, so that's why all courts are connect with each other. It's not like they are separate. Okay, they're integrated with each other. Okay, I will not say the Supreme Court is controlling to the High Court or District Court, no, but let's say but whatever things has been told by the, or whatever the judgment has been given by the Supreme Court, that has to be applicable to the High Court as well as to the District Court. Okay, appointment of state governors by center. Okay, so in federal system, one thing is also important, like in the states, the governors are appointed by the center. Okay, all India services, how they are managing this federal system by all India services. What are the all India services? Or the IAS, IPS, and Indian Forest Services. These are the three services which is known as all India services. Like these people were recruited by UPSC, and they were trained by the center, and they will work in a particular, respected states based on the cadre they have been allotted. So that's why it is known as all India services. Okay, so person is recruited and trained by the center, and they are working under the state government. Emergency provision, okay, we have emergency provisions as well, and so on. Okay, so these are also the features of federal system. Other things, like moreover, the term federation has nowhere been used in the constitution. देखिए, जो फेडरेशन टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी दिया नहीं गया है, बट आर्टिकल 1 on other hand describe India as union of state. Okay, if you read the Indian constitution, you'll find that article 1 says India as a union of state. So India, what is India? जितने भी स्टेट हैं सबको मिल के इंडिया है. ओके, सबको मिल के इंडिया बनाया गया है, बट इज़ नॉट लाइक उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है. ओके, कि ओके वी आर ज्वाइनिंग टुगेदर एंड वी आर मेकिंग इंडिया. नो, जैसे यूएस में है, यूएस में देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द स्टेट्स एंड दे फॉर्म द यूएसए, बट इन इंडिया इज नॉट लाइक दैट. They are actually union of state, which implies two things. One, Indian Federation is not a result of agreement, that I have already mentioned that, by the state, and two, no state has the right to secede from the federation. Okay,
अब देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। इसके दो मीनिंग, एक मीनिंग ये है कि ये जो सारे स्टेट मिलके यूनियन ऑफ स्टेट बना रहे हैं इज़ नॉट एग्रीमेंट। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि तमिलनाडु या फिर सारे लोगों ने मिलके बोला कि ओके वी आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग स्टेट एंड वी आर साइनिंग वन एग्रीमेंट, वी कैन सेसेड एनी टाइम। इज़ नॉट लाइक दैट। यूएस में है ऐसे। ओके, सेकेंड थिंग, नो स्टेट हैज़ राइट टू सेसेड फ्रॉम द फेडरेशन। तो और कोई भी स्टेट, तमिलनाडु हुआ या यूपी हुआ या बिहार हुआ, कोई भी निकल नहीं सकता फ्रॉम द फेडरेशन। ओके, so this is the two different meaning of union of state. Hence, Indian Constitution has been variously described as federal in the form but unity in spirit. Okay, so due to this, the Indian Constitution has been variously described. Federation in form but unity in spirit. ठीक है, तो इसको ये भी बोलते हैं कि फेडरेशन इन फॉर्म, ठीक है, बट यूनिटी इन स्पिरिट। क्वासी फेडरल बाई केसी वेरेट, ठीक है, ये एक है, मतलब जो भी फिलोसफर हैं या फिर जो भी पॉलिटी के जानकार हैं लोग, इन्होंने बोला कि इट्स अ क्वासी फेडरल। फिर उसके बाद इन्होंने बोला मॉरिस जॉन्स, ड्यू टू दिस ही इज सेइंग bargaining federalism, and by Gavin Austin says that cooperative federalism. These things you remember, okay? किसने क्या बोला था, quasi federal किसने बोला था, bargaining federalism किसने बोला था। I have seen the question based on this Gavin Austin, okay, who said this, cooperative federalism, it's said by the Gavin Austin. Okay, federation with the centralizing tendency by Ivor Channing। ठीक है, अब इस चीज़ को ही अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ओके इट इज़ अ क्वासी फेडरल, इट इज़ अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इट इज़ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इट इज़ अ फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ओके, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज salient feature of this? We'll see that. देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्ट फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसको ऑप्ट किया, ना कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको। ओके, सो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में दे हैव प्राइम मिनिस्टर, सो वी कैन सी दैट इन द at the center level we have prime minister, we have president, but in America the president is directly elected by the people. There is a direct election, but in India we have president but it is not directly elected. It has been elected by the Lok Sabha, Rajya Sabha and the state assemblies. Okay, but in US it is direct election. Next, parliamentary system is based on the principle of cooperative and coordination between the legislative and executive organs, while presidential system is based on the doctrine of separation of power between the two organs. देखिए, अब what is difference between the British parliamentary system and the presidential parliamentary system? Parliamentary system says that it is a principle of cooperation between the legislative and executive organs. ठीक है, बट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स। प्रेसिडेंशियल में लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो जो अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लोकसभा में, राज्यसभा में सेशन चल रहा, बजट सेशन आने वाला है। तो उससे पहले अभी चुनाव के बाद फर्स्ट टाइम लोकसभा राज्यसभा मतलब असेंबल हुआ है।
ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट का जो स्पीच हुआ था उसको, उसके मोशन को पास किया जाएगा, उसका डिस्कशन चल रहा था। व्हाट इज हैपनिंग देयर, जो हमारा लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर हु इज लेजिस्लेचर, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा, दे आर मेकिंग अ बिल, okay, and it is implementing in India and obviously in state level and central level. So what government is doing, देखिए गवर्नमेंट लॉ भी बना रही है, ऑल्सो दे आर गवर्नेंस भी कर रही है। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, गवर्नर हुए, प्रेसिडेंट हुए, so they are actually running the country as well as they are making law for the country. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों चीज़ें होती है, जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है वो लॉ भी बनाती है और वो रूल भी करती है, ठीक है। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंट इन यूएस ही इज एग्जीक्यूटिव, ये वो रूल करता है, वो लॉ नहीं बनाता है। लॉ बनाने का काम किसका है, उनकी सेनेट का है, मतलब सेनेट मतलब उनका जो लोकसभा, सेनेट एंड कांग्रेस दो उनके हैं। सेनेट दे आर मेकिंग द लॉ, उसमें प्रेसिडेंट का ऐसा कुछ रोल नहीं होता है। बट या प्रेसिडेंट का रोल है, वो साइन करेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि उसके मेंबर्स जाके डिस्कस कर रहे हैं ना, बिल प्रेजेंट कर रहे हैं, पास करें, वो काम प्रेसिडेंट का नहीं है, वो सेनेट करता है। ओके, बट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट लाइक दैट। जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है वो लॉ भी बनाएगी, वो रूल भी करेगी, वो एडमिनिस्टर भी करेगी एट द सेंट्रल लेवल। तो इवन स्टेट लेवल में भी वैसे ही होता है, ठीक है। जो मान लेते कि यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर, ही इज़ रूलिंग टू द स्टेट एज वेल एज ही इज़ मेकिंग लॉ इन द स्टेट असेंबलीज। ओके, सो दिस इज नथिंग बट the principle of cooperative and coordination between the legislative and executive organ. Okay, but in the presidential system it is based on the doctrine of separation of power between the two organs. Okay, so I hope you understand what is meaning of these two. Next, parliamentary system is also known as Westminster model of government, responsible government and cabinet organ. देखिए वेस्टमिनिस्टर जो है ये जो हमारा ब्रिटिश लंदन में वेस्टमिनिस्टर एक जगह है जहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है, इस वजह से इसका नाम वेस्टमिनिस्टर पड़ा है। ओके, सो दैट्स वाई द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। आपको पता है कि लोकसभा में लोकसभा के चुनाव के बाद जो भी मेजॉरिटी फॉर्म करती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, फिर उसके बाद उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इलेक्ट होते हैं, दे ऑलरेडी इलेक्टेड। पहले प्राइम मिनिस्टर विल टेक ओथ एंड देन he or she will say to the president, okay, these will be my ministers. Okay, so then president will appoint them as a minister. They are actually known as council of minister. They will be 15% of total seat of the Lok Sabha. So out of those 15%, it is I think some 40. There will be some few members, like you can say the prime minister, defense minister, finance minister, home minister, or maybe if prime minister think to someone else, they will form the cabinet. Okay, cabinet is a small body, but it is a decision making body. They will think, okay, now we are going to pass this law in the Lok Sabha. So they will come up with the idea, and then based on the ministry, okay, if it is related to food ministry, it will go to the food ministry. If it is related to the finance ministry, then finance ministry will take care of that. Then it will present in the parliament, and then it has to be passed in both the house, and then it will go to the president assent, then it will become the law. Okay, so that is nothing but is the cabinet government. Okay, so this Westminster model government is nothing but it is a responsible government and cabinet government. देखिए कुछ कई बार मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा आगे का बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे
समटाइम इज़ नॉट रिलेवेंट, ओके। बट चूँकि वो चीज़ आती है तो आती मीन्स वो मान लीजिए कैबिनेट टर्म आया तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कैबिनेट, ठीक है। आप थोड़ी आपको ठीक है पता है तो अच्छी बात है, बट कोई अगर ये वीडियो पहली बार देख रहा है उसको नहीं पता व्हाट इज़ कैबिनेट, तो मैं थोड़ा सा आगे का बताता हूँ। एनीवे ये सब चीज़ें बाद में भी आएंगी, जैसे जब हम लोग प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें एनीवे इट इज़ गोइंग टू रिपीट। बट ठीक है, अगर आपको पहले से पता है तो इट्स गुड, ओके। सो डोंट थिंक लाइक आई एम telling you know extra thing or nonsense thing which is not required, but is not like that, is required actually. So if you are knowing is fine, if you don't know you can know from here, okay. Then constitution established the parliamentary system not only at the center but also state, okay, ठीक है। वो already we have seen that कि जो parliamentary system है इट इज़ नॉट ओनली एट सेंटर, हमारा लोकसभा राज्यसभा सेंटर पे है, बट ऑल्सो वी हैव इन द स्टेट लाइक यू नो स्टेट असेंबलीज वी हैव, कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, ओके। जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। सो देयर इज नो अपर हाउस लोअर हाउस, सो दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम वी हैव एट द सेंटर लेवल एज वेल एज एट द स्टेट लेवल। द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके फीचर्स क्या हैं, दैट विल सी हियर। सो द फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, सो वी कैन से इज द यू नो द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड रियल एग्जीक्यूटिव इज नथिंग बट इज द प्राइम मिनिस्टर। एंड मेजॉरिटी पार्टी रूल, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी रूल मीन्स लेट्स से लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं, तो मेजॉरिटी के लिए हमें 272 सीट चाहिए, ठीक है। 272 सीट अगर आपका आ जाता है यू विल फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे अभी बीजेपी के 240 आए हैं, आई मीन यू कैन से दैट देयर इज़ नो पार्टी विच हैज़ यू नो कंप्लीट मेजॉरिटी, बट NDA has formed the government, okay. BJP plus their alliance, they have formed the government. So after coalition they have crossed the majority which is 272. Now it is in NDA it is now more than 290. So now they have formed the majority and they have formed the government, okay. So in the parliamentary system the majority party rule, like 50 plus 1, 50% plus 1, a party which will you know won the seat which is 50% plus 1, then that party can form the government. So it is majority party rule. Similarly in state also, okay, like in UP there is 403 seats, so to form the government in UP it is required some 202 seats, so a party which will score or get 202 seats, then that party can form the government. Similarly in other states as well. Collective responsibility of executive to the legislature, okay. So obviously who is the executive? At the center level prime minister, at the state level chief minister, they are collectively responsible to the legislature, okay. To at the center level to the Lok Sabha, okay. Sometime please remember this, sometimes they have asked question like prime minister is responsible to for Lok Sabha, Rajya Sabha, he is responsible to Lok Sabha, don't put Rajya Sabha, okay. Even though if he is a member of Rajya Sabha, he is responsible to Lok Sabha only, okay. And yeah, at the state level chief minister, okay. Next, membership of minister in the legislature, obviously at the center level MP will be the member of Lok Sabha, and at the state level at the at the assembly level the member will be the MLA. So obviously there will be membership at the state level as well as to the Lok Sabha.
I mean, obviously, you know, the ministers, so out of them, some people will become the minister, okay? And obviously, they will be the member. Okay. Leadership of Prime Minister or Chief Minister. पहले से मैंने मेंशन कर दिया कि at the center level, who will be the leader? Prime Minister. At the state level, who will be the leader, sir? Who will be the leader? Chief Minister. Dissolution of lower house. ठीक है. अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, अगर वो मेजॉरिटी लूज़ करती है, जैसे लोकसभा में 272 से उनके 260 हो जाते हैं, ठीक है, सो द लोकसभा विल डिसॉल्व, ओके, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म, मतलब उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, और ऑब्वियसली ने आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस मीन्स 5 साल कंप्लीट हुआ, डिसॉल्व हो जाएगी, इवन असेंबली ऑल्सो, बट ऑब्वियसली, और इस केस में भी डिसॉल्व होगी अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं है, तो दूसरी पार्टी को बोला जाएगा कि यू कैन फॉर्म, इफ अदर पार्टी विल ऑल्सो नॉट फॉर्म, देन इट विल डिसॉल्व, ओके। फिर उसके बाद मान लेते हैं प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए किसी को टेम्परेरी बेसिस पे बोल सकते हैं, टिल दैट द आफ्टर इलेक्शन when majority, when a party which will, there will be election and some party or one party, they will they will come up with the majority, and then they can form the government, okay. So obviously you can say that when there is no majority, it will dissolve, okay. So at the central level, prime minister has to resign. At the state level, chief minister has to resign, okay. So lower house, okay. So at the center level, Lok Sabha. At the state level, state assemblies. So please remember, at the state assembly there is legislative council, and at the center level Rajya Sabha. They are not going to dissolve. वो दोनों upper house है, वो dissolve नहीं होंगे, but lower house will dissolve, okay. Now, more things about parliamentary form of government. Even though Indian parliamentary system is largely based on the British pattern, there are some fundamental difference between the two. For example, Indian parliamentary system is not a sovereign body like British parliament. देखिए, हमारा जो Indian parliamentary system है, ये largely based on British pattern है, but दोनों में कुछ difference भी है. क्या difference है? जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट है, इट्स नॉट अ सोवरेन बॉडी, ठीक है, बट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इट्स अ सोवरेन बॉडी. गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज रिमेंबर, दे कैन मेंशन दिस स्टेटमेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी. नो, इट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी, बट यस, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द सोवरेन बॉडी. फर्दर, इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक, while the British state has hereditary head monarch, ठीक है. अब देखिए, इंडियन स्टेट में जो इलेक्टेड हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट, ठीक है, जो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, बट एक्चुअली जो हमारा हेड ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, इज़ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, इज़ अ प्रेसिडेंट. इट इज़ इलेक्टेड, बट इन द ब्रिटिश स्टेट इट इज़ हेरिडिटरी, मोनार्क होता है, ठीक है. जैसे वहाँ पे रानी, ठीक है, क्वीन होती है. जैसे मान लेते हैं कि वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया, और जो रानी है वहाँ की क्वीन है, वो अगर साइन नहीं करती है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बिकम अ बिल. बट इंडिया में नहीं है ऐसा, ओके. इट्स नॉट हेरिडिटरी, इट इज़ द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड, ओके. अब उसका चुनाव कैसे होता है, कैसे इलेक्ट किया था, वो जो प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, बट इट इज़ अ इलेक्टेड, इज़ नॉट हेरिडिटरी, ठीक है, वो नॉमिनेट नहीं होते हैं, ओके. नेक्स्ट, इन अ parliamentary system, whether in India or Britain,
the role of prime minister has become so significant or crucial that political scientists like to call the prime ministerial government. अब देखिए, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन इंडिया और ब्रिटेन, तो इसमें जो रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड क्रूशल. ओके, एंड इसको जो है ऑल्सो नोन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे आप सुनते रहते ना मोदी गवर्नमेंट, he is a prime minister. Okay, so that's why people say the prime ministerial government. Okay, it is very very significant and it's very crucial. So till that we have seen the federal system, then parliamentary system form of government. We have seen the features of this. Now we are going to see the features of synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Okay, so this we are going to see. देखिए, doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British parliament, while the principle of judiciary supremacy that of the American Supreme Court. अब देखिए, जो हमारा पार्लियामेंट है वो भी सोवरेन है. ठीक है, वो एंड इट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, बट जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी है, जो हमारा है जैसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो कहाँ से आया है? वो आया है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से. ठीक है, तो जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है वो भी इट इज़ ए इंडिपेंडेंट. ओके, नेक्स्ट, just as Indian parliamentary system differs from British system, the scope of judicial review power of Supreme Court in India is narrower than of what exists in US. अब देखिए, जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएस सिस्टम, उसी तरीके से जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया है, इट इज़ नैरोवर देन दैट व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस. ठीक है, वी हैव जुडिशियल रिव्यू बट इट इज़ एक्चुअली नैरोवर देन वॉट एवर एग्जिस्ट इन द यूएस. ओके, देखिए ये कैसे है नैरो, ये सब सारी चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट आगे के चैप्टर्स में सुप्रीम कोर्ट मीन जो जुडिशरी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में चीज़ें देखेंगे. ऑलरेडी 32 मिनट का वीडियो हो चुका है, सो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड मोर. ओके, नेक्स्ट, दिस इज because of American Constitution provide for due process of law. Against that, the procedure established by law contained in the Indian Constitution Article 21. अब देखिए, जो नैरोवर है, जो इंडियन जुडिशरी है वो नैरोवर है. इट इज़ बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो सब जब हम लोग जुडिशरी पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे, बट अभी आप ये समझ ले को it is Indian judiciary is narrower because the American Constitution provides for the due process of law against that of the procedure established by law contained in the Indian Constitution Article 21. You know the Article 20. What is Article 21? Right to liberty and right to life and personal liberty. Okay, so due to this it is narrower. Next, therefore, the framer of Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and American principle of judicial supremacy. ठीक है, तो इसके वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने they preferred proper synthesis between the principle of parliamentary sovereignty as well as American principle of judicial supremacy. Of the Supreme Court on one hand can declare the parliamentary law as unconstitutional through its power of judicial review. अब देखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल बॉडी. ठीक है, कैसे? अब जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया, ठीक है, और उन्हें अगर ऐसा लगता है कि इट इज़
हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट बोल दी इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो इट इज़ हाउ इट इज़ कमिंग, इट इज़ नथिंग बट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट दे कैन नॉट डू द थिंग्स विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा सामने और बोल देगा कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ नल एंड वाइड, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. Then the parliament on other hand can amend the major portion of constitution through its constituent power. अब देखिए पार्लियामेंट जैसे कि if they have special majority, then they can amend major portion of the constitution through whatever the amendment power is given in the constitution. So they are differentiating both. What is power of Supreme Court? What is power of Parliament? Okay, but still power of Supreme Court is more because let's say Parliament is making the law which is unconstitutional. So Supreme Court will come and they will say no, it is null and void because it is unconstitutional. Okay, so we have seen many things with respect to the salient feature of our constitution. There is a lot more things given. We'll see one by one. Thank you for watching. Bye bye.